Market Gyan, where we try to bring you the best research ideas and best stock ideas. And once again, start with our slogan, जिसके पास है सही ज्ञान वही होगा मार्केट से धनवान. So today's breaking news is oil has plunged to zero levels, yeah, near negative levels. So this is the big news for today and जानिए इसका मतलब क्या होता है. In some delivery exchanges across the world, कहीं ऑयल जीरो पे पहुंच गया है और कहीं जगह ये कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव में हो गया है. इसकी बड़ी वजह ये है फ्रेंड्स के देयर इज अ ह्यूज ऑयल सरप्लस इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं they are pumping more and more oil, and so the storage capacity and storage places for oil is are of huge demand. तो लोगों के पास ये ऑयल जो बड़े स्टोरेज वाले हैं और जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, जगह कम पड़ रही है. द स्टोरेज रेंटल प्राइसेस हैव गॉन अप बाय मोर देन 5 times and 10 times. तो हुआ क्या है कि मई का जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें लोगों ने फ्यूचर्स बाय किया था, वहां व्हेन जब मई कॉन्ट्रैक्ट 19th मई को एक्सपायर होना था और जब लोगों ने जिनने लॉन्ग किया था एंड दे वर नॉट एबल टू अनवाइंड, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि डिलीवरी लेनी पड़ती है. तो दैट इज द रीजन कि जब लोगों को डिलीवरी लेनी पड़ी उनके पास वो ऑयल स्टोर करने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी, एंड दे वर रेडी टू गिव दैट ऑयल फ्री ऑफ कॉस्ट सो दैट उन्हें स्टोरेज पे पैसा ना खर्च करना पड़े, या कई जगह तो दे वर इवन पेइंग ऑफ टू डिस्पोज दैट ऑयल. इस वजह से वी सॉ अ few news items where they showed zero या negative oil, क्योंकि कुछ contracts have been traded at that price. मतलब इसका ये कतई मतलब नहीं कि अगर हम लेने जाएं तो हमें इस तरह से मिले. दिस इज द प्राइस ऑफ बिग बिग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेड होते हैं और जिसकी डिलीवरीज होती हैं. तो कई बार जब जो बायर है वो ऑनर नहीं करता है तो कुछ 2 3 4 कॉन्ट्रैक्ट्स इस प्राइसेस पे ट्रेड होते हैं और वही भाव छप जाता है. एंड दैट इज द रीजन why all over the world the news are flashing that crude oil plunges to zero. But इसका ये मतलब नहीं, which is the good news is कि मतलब कोई ऑयल आपको जीरो पे नहीं मिलेगा. Like for buyers like you and me, it's not available like that. Anyway, now proceeding to our today's topic of discussion is about a mid-cap sector company, which is also one of my favorite companies, is from the consumer durable sector. जी हाँ, it is from the luggage industry, and it is only one of the very few organized players in India. जी हाँ, दोस्तों, the name of the company is VIP Industries. VIP Industries is a very very strong brand for all soft and hard luggages across the world, and especially in India. It is a zero debt company, और जैसा आप देख सकते हैं कि Saif and Karina are the brand ambassadors, so that gives a big boost to the brand. चलिए आइए देखते हैं इसके financials and देखते हैं कि how the company fares and how the company looks for the near future. So as you can see, I use marketsmojo.com, the website जो काफी information दे देती है. It's free of cost, friends. You also can go to marketsmojo and get out this information जहाँ से मैं use कर रहा हूँ. आप देखें profit after tax has grown decently and long term drivers भी positive हो गए हैं. Long term financial performance is excellent. It is a virtually debt free company, and at this price of around 227, which was yesterday's closing price, the stock looks very attractive. Even the website के valuation के हिसाब से, अगर जहां मेरा कर्सर है आप देखेंगे, it shows it is very attractive because it has almost fallen from 400 450 odd levels. So it is a very attractive buy, I feel, at this time. Although pandemic and corona is scaring off the
aviation sector, but whenever the sector is back, this is a leader in its marketplace in India. इसका कोई और नियर बाय कंपटीशन है नहीं, एंड फॉर द लॉन्ग हॉल अगर ये सेक्टर में आपको इन्वेस्टेड रहना है कंज्यूमर ड्यूरेबल में, तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पिक है फॉर इयर्स टू कम। आइए देखते हैं कुछ ब्रोकरेजेस हाउसेस ने क्या इस पे सलाह दी है। तो प्रभुदास लीलाधर has given a buy rating somewhere in February and has a target price of 472 on the stock, and ICICI Direct की का target price almost 505 rupees on the stock, so which is almost 100% up from the current levels. So in my opinion also this stock can be accumulated around this time. आइए इसके charts देखते हैं। चार्ट्स पे ऑलमोस्ट 229 ऑड लेवल्स पे चल रहा है। चार्ट्स में यूज करता हूँ www.charting.com, ये आप भी यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड फ्री वेबसाइट टू सी द चार्ट। सो वीआईपी इंडस्ट्रीज का आप चार्ट देखें, सो there was a huge fall from 400 levels and it made a bottom around 200 and it's quoting at around 228. So I feel a good accumulation zone. You can start accumulating now also and increase your accumulation between 180 to 200 when Nifty tanks. So this is an excellent pick. Isko you should have it in your portfolio, and it has, I think it has a very good and bright future ahead. So दोस्तों वीडियो यहीं खत्म होता है। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड जो भी आपके कमेंट्स हैं प्लीज हमें बताइए। एंड एज यूजुअल विद द डिस्क्लेमर के हम स्टॉक्स सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए डिस्कस करते हैं, एंड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर before taking any decision on the stock. Goodbye and have a great day.